Good morning, everyone. This is our workbook, class 4th, Environmental Studies, looking around. Today, we will discuss about exercises of chapters which have been learned. So, आज हम इनकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको पढ़ेंगे, समझेंगे. Chapter 1, Going to School. 1. Select the best option. Which of the following work cannot be done by pulley? B. Helping a blind man cross the road. पुली है, उसके द्वारा कौन सा वर्क नहीं किया जा सकता? तो पुली है, उसके द्वारा हम ब्लाइंड मैन को रोड क्रॉस नहीं करवा सकते. 2. You can reach school on a block cart if you have to move through green fields. अगर ब्लॉक कार्ट पे स्कूल जाना है तो ग्रीन फील्ड से जा सकते हो, बाकी से नहीं. The जुगाड़ is made out of D. All of these. A motorcycle. B. Planks of wood. C. Waste material. 4. Knee-high water is found after rain in Assam. Knee-high घुटनों तक पानी आता है आसाम में. 5. The transport used for going to school in Gujarat makes a फट 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 साउंड. यह फट फट साउंड बनाता है. कौन जुगाड़ करता है गुजरात में? C. 2. Write T for true and F for false. 1. We can ride a bicycle to go to school if it can be reached by road. True. अगर रोड के द्वारा स्कूल पहुंचना है तो बाइसिकल यूज कर सकते हैं. 2. We can go to school on a trolley if the school lies across a river. True. ट्रॉली, अगर रिवर के पार है स्कूल तो ट्रॉली के द्वारा जाया जा सकता है. ट्रॉली है जो दो खंभों के बीच तार जुड़ा हुआ होता है, उसमें बैठकर जाते हैं. We can ride a जुगाड़ to reach school if it lies across the green field. False. जुगाड़ रोड पे चलता है, ग्रीन फील्ड यानी खेतों में नहीं चलता. We cannot reach school if we have to cross a road bridge. False. क्योंकि रोड ब्रिज क्रॉस करना है तो स्कूल आसानी से पहुंच सकते हैं हम. 5. We can ride a camel cart to school through a thick forest. False. जो घना जंगल होता है उसमें कैमल के द्वारा नहीं जा सकता. Fill in the blanks. 1. A vallam is used to reach school in some parts of Kerala. वल्लम है वो स्कूल जाने का जरिया है केरला में. 2. In parts of Assam, children reach school by crossing over bamboo bridges. 3. Children in the mountains of Uttarakhand reach school by going on rocky paths. Rocky paths मतलब जो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी रास्तों से. In Rajasthan, 4. In Rajasthan, children use blank to reach school. Camel cart. राजस्थान में स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट का यूज होता है. 5. Sunlight doesn't pass through thick jungle. थिक जंगल होता है, वहां से सनलाइट जो सूर्य प्रकाश है वो नहीं पहुंचता वहां पे. मैचिस देखो. ट्रॉली ब्रिज wood and iron rope. Bamboo bridge, bamboo and rope. Cement bridge, bricks, iron rods and cement. For iron bridge, iron. तो इस चैप्टर फर्स्ट में यहां तक रहेगा. देन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. ईयर टू ईयर. 1. Which of the following animals has tiny holes on both sides of the head to ear? Crow. ये कौन सा एनिमल है जिसके दोनों साइड पे छिद्र होते हैं, हॉल्स होते हैं दोनों साइड पे? तो क्रो है. द ब्लैंक हैज ईयर्स लाइक फैंस. तो एलिफेंट.
एलिफेंट के जो ईयर्स हैं वो फैन जैसे, पंखे जैसे होते हैं। 3. द डोंकी हैज ईयर्स। सी ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। वो तो आपने डोंकी देखा है कैसे होते हैं उसके कान। 4. द पैटर्न्स बाय विच एनिमल्स मे बी रिकग्नाइज आर ड्यू टू बी हेयर ऑन देयर स्किन्स। जो एनिमल्स हैं पैटर्न के द्वारा पहचाने जाते हैं तो उनके जो हेयर होते हैं स्किन पे उसके द्वारा। 4. नाउ वेयर डू वी सी डायनासोर्स। तो सी इन फिल्म्स एंड पिक्चर्स, क्योंकि अब है डायनासोर्स हम फिल्म्स और पिक्चर्स में देखते हैं, रियल में वो है नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 2. ट्रू फॉल्स। 1. आवर नेशनल एनिमल इज पीकॉक। फॉल्स, टाइगर है। 2. अ फिश हैज ईयर्स बट वी कैन नॉट सी इट। ट्रू, फिश के कान होते हैं मगर हम सुन नहीं सकते। 3. बफेलोस एंड काउस हैव hair on their bodies. True. Sheep do not have hair on their bodies. False. Sheep के बाल होते हैं। 5. Squirrel lays eggs. False. यहां तक होगा, 3 क्वेश्चन तक। Fill in the blanks. 1. Usually we cannot see the holes used for hearing by a bird because they are covered by feathers. तो जो बर्ड होते हैं उसके फीदर, पंखों से वो ढके होते हैं कान। 2. If an animal does not have outer hair, it will not have patterns on its skin. 3. Crocodiles and lizards hear by tiny holes on the sides of their heads. 4. All animals that give birth to their young ones have visible ears. Visible यानी दिखाई दे ऐसे कान होते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं एनिमल्स, उनके कान दिखाई देते हैं। 4. 5. Animals not having visible ears can be recognized by having no hair on their body. Next chapter. A day with Nandu. A day with Nandu. 1. Elephant sleep for blank day. 2 to 4 hours in a day. 2. A normal 3-month-old baby elephant may weigh about 200 kg. 3. Who complains that they have to dance on an empty stomach? The monkeys. 4. Elephants move around in groups called herds. 5. Adult elephants eat D. Twigs and leaves. 2. True false. 1. People specially call pigeons to feed them with grain. True. लोग हैं जो पिजन यानी कबूतर को बुलाते हैं और दाने देते हैं। 2. Children don't like cats. False. चिल्ड्रन को ये अच्छा नहीं लगते कैट्स, तो ये गलत है, अच्छे लगती हैं कैट्स। 3. When horseshoe are fixed to a horse hooves, the horse loves it. False. जब घोड़े के पैरों में हूस लगाए जाते हैं, हॉर्सशू लगाए जाते हैं, तो घोड़े को अच्छा लगता है, ये गलत चीज है, उसको दर्द होता है। 4. The oldest male is the leader of a herd of elephants. False. क्योंकि फीमेल होती है, जो एलिफेंट्स के हर्ड्स होते हैं उसमें लीडर फीमेल होती है, मेल नहीं होता है। 4. Elephants lie in the mud to cool their bodies. True. Fill in the blanks. Male elephants stay in the herd till they are 14-15 years old. 2. The grey forest that Nandu imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. 3.
Living only in a basket, the snake has forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For entertainment, humans use three animals: bears, monkeys, and snakes. 5. When baby elephant play, they pull each other's tails. Tails यानी पूंछ खींचते हैं. तो इसका यहां तक है. अभी नेक्स्ट वन का वन. Blank were Amrita's best friends, trees. Children of Khejaldi played C in the shades of the trees. 3. The king wanted the trees to be cut because the wood was needed for his palace. 4. The villagers protected the trees from being cut by C, hugging the trees. Hugging means उसको गले लगा लेना. Trees को गले लगा लिया. 5. The most common tree that grew in Amrita's village was the blank tree. So B, Khejdi. Right, TF. Amrita and her companions sacrificed their lives almost 300 years ago. True. The elder of Khejaldi village said that plants and animals can live without humans. True. 3. The king stopped the tree cutting when he came to know of the strong feelings of the villagers. True. 4. Today Khejaldi village is again like a desert. False. 5. Leaves of the Khejdi tree are eaten by animals. True. 6. The story of Amrita is a true story. True. तो इसका यहां तक है. अभी नेक्स्ट 5. Chapter 5, 1. Blank are the most important bees for the hive. B. Worker bees. 2. Honey bees suck blank from the flowers. D. Nectar. 3. Blank live and work like honey bees. All of these. Termites, wasps, and ants. 4. Lychee trees give flowers in the month of C. February. 5. How does Anita now go to college? A. By a cycle. Right, TF. 1. In childhood, Anita used to graze her cows. False. 2. Anita studied only up to class 5th. False. 3. Anita was popular among the children she was teaching. True. At village meetings, Anita talks about the importance of beekeeping. False. 5. Anita stays यानी रहना in Muzaffarpur district of Bihar. True. Blanks. 1. We need to do a beekeeping course to keep bees. 2. Honeybees lay their eggs from October to December. 3. The queen bee lays eggs. Lays यानी रखती है, देती है. 4. Honeybees are kept in a box. 5. There is one queen bee in a hive. Hive यानी मधपुड़ा में एक ही होती है queen. 6. Sugar and medicines are required to keep the bees. Sugar चाहिए और medicine चाहिए. Now 6th chapter 1:1. The doctor said that Radha shouldn't move her leg for 6 weeks. 2. Omana passed her time on the train by D. All of this. 1. A.
writing her diary. B. Looking out of the window. C. Eating meals and snacks. 3. Omana's train had started from C. Gandhidham. 4. Radha did not go with Omana on the journey because B. Radha's leg was fractured. 5. At Valsad, Omana's family bought blank to eat. D. Bananas and chikus. TF 1. The train reached Valsad early in the morning. False. 2. Sunil and Anne were also going to Kerala. True. Omana's Amma and Appa had got the middle berth in the compartment. False. 4. Omana's family checked their names on the reservation chart. True. 5. The fields outside the windows of train were green with lots of trees. False. This one. Blanks. 1. Omana and Radha were best friends. 2. Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. 2 college students had the upper berths in their compartment. 4. The sky becomes orange in color when the sun was setting. Setting मतलब सूर्य अस्त हो रहा था तब आसमान ऑरेंज हो जाता है. Sunil and Anne were going to their grandmother's house. तो इस तरह से ये चैप्टर 6 तक के क्वेश्चन आंसर हमारे पूरे होते हैं. लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. गुड बाय.